point. Because this was the point that I wanted to make. Because was he an Islamist or was he a Naqshbandiya fanatic? And that too because he did not have any option but to fall under the clergy which sided with him against all other sects within that existed back then, because the other sects essentially were against his succession. So there was only one sect that supported his succession, and this was the sect which was extremely problematic. आप देखेंगे कि Sheikh, especially the lineage that it was coming from. I'm not saying that all Naqshbandiyas are like that, but Sheikh Emissar Hindi basically said that without the destruction of Hindu institutions and without the destructions of Hindus themselves, no justice can be found. He also said that before the Hindus, in front of the Hindus, unless you are basically butchering cows and desecrating their religion, Islam cannot be established. So it was his son, Sheikh Masoom, Sheikh Ahmad Hindi. And by the way, Sheikh Ahmad Hindi was also defeated in a debate during Akbar's time. And later, when he raised this issue again during after Akbar died, Jahangir literally put him in jail in Gwalior. And later, Sheikh Masoom, his third son, became the teacher of Aurangzeb in Islamic jurisprudence. When Aurangzeb rose to power, everyone was against him. Everyone was against his succession, but except for one sect within that which were present during that time, and this was the same lineage and the same sect and the same order which followed Sheikh Emissar Hindi, which obviously was a problematic person. So my point was not that Aurangzeb was not, a fundamentalist. Aurangzeb was a fundamentalist, but the brand of fundamentalism that he and the school of fundamentalism that he was coming from was definitely Sheikh Ahmad Hindis, right? So he was not unique in his own way, in his ways, but just that the people, the Mughal emperors prior to him did not support that sect. So that was a point that I wanted to make. They also got many of the other Muslims of other orders executed. They had them executed on one or the other political grounds and one or the other excuses. They would just claim him to be some or the other kind of kafir, or kafir, or would be basically brand him as an apostate, and then Yeah, they would sorry, I obviously got take. disconnected. Can you Okay. give me a reset? Okay. What you said? Okay. So I was basically mentioning about the influence of Sheikh Masoom and Sheikh Ahmed Sir Hindi's this whole lineage on Aurangzeb and his courts, that they. अरे फिर गया. Where is he? आ अच्छा आ गया गया. हाँ हाँ हाँ. नहीं, तो इसका कहना है यशस्वी का कि शेख अहमद सरहिंदी का जो बेटा है ना, थर्ड सन, उसने पढ़ाया है औरंगजेब को। तो जो भी औरंगजेब का जूरिस्प्रूडेंस आता है ना, बस यही एक वो सेक्ट है जो उसको सपोर्ट कर रहा था। बाकी द अदर सेक्टर्स कंटेम्परेरीज उन्होंने उनको ना वाइप आउट किया गया, जस्ट टैग देम एज apostates or kafirs. many That's the of the main point many of of that. the figures of other sects were tagged as apostates and were declared as kafirs, Yeah, and their or and their or or Yash, that was my whole point. When the temples were being destroyed, Grish basically stated, "Okay, why weren't mosques destroyed? Because they were simply taken over I think there were some where they mosques could." in South India which were definitely desecrated, if not destroyed. I believe it was in Golconda. Yeah, I there I'm were I'm No, no. there might Makkah be. Masjid was continued by Okay. Aurangzeb. What was started by Golconda Sultan was continued by Aurangzeb. He completed it. It was not destroyed. It was just taken over. see, let's be honest, there have been even like mosques that were destroyed by Hindu rulers as well. Okay, so there's no point in No, but taking that would be these. what about Parito? Yeah, वही तो Naqshbandis, वही yes, तो मैं yes, कह रहा हूँ कि Bromila ji, yes, Naqshbandis did have respect within the Mughal courts, and Jahangir also did respect Sheikh Ahmad Hindi, but they did not have the complete monopoly over Islamic jurisprudence. There were always some of the other contests. For example, the this Naushirwan debate that happened during the tenure of Akbar, during the rule of Akbar, that essentially was a counter to whether Hindus can actually be just,
right? Whether Hindus can actually deliver justice, whether Hindus actually have a sense of justice, or do they even deserve justice? Right. This was the point that was raised by Sheikh Ahmed Sarindi, who was of the opinion that they cannot be. Upon which I believe there were people who were brought by Akbar who said that if Naushirwan was just, who also was not a Hindu, then sorry, who was not a Muslim, then obviously Hindus can also be just, and Hindus can also deliver justice. So there is no point in actually, their complete removal from to be absolutely hostile to them. Okay, so I think we agree on the fact that mosques were taken over in a different way where he did not agree, and then I think compared to the temples. Now moving to another direction, which you have rightfully pointed out, that Shaji, I Rajput. want to add Okay. one thing to this. Yeah, yeah, go ahead. Aurangzeb also kind of, you can say, got after this Ismaili Bohra community, and from time and again he would actually try to hurt them or something like that. Yeah, so now with the Bohra community, the issue has always been that whether it's Sunnis or Asna Ashris, they've kind of been outsiders. So whoever comes into power always has an issue with them. When they're like, it's not justified in that way. But again, they were kind of referred to as heretics of the time. But again, there's another aspect which I would like to get into, and that is that he basically changed the ruling class in terms of nobility. So he went against the Rajputs, that's very clear, but he also went against a lot of Persians. Now, uh, many would say that that was oppression against these communities, but these were like affluent families. They were ruling classes before he came, and he basically commissioned and brought forward others who were nobodies before that time period. So, would you not say that he gave opportunity to new people? Which is why I once mentioned on Twitter that he was the first social justice warrior, and everybody basically, went after me. What? Yes, Aurangzeb was the first social justice warrior. That is what I said. Okay. Karl Marx actually derived his ideas of social justice from him. That's actually true, विवेक जी। इनडायरेक्टली वो उसका रूहानी बाप था, मिला नहीं था उससे। क्या ख्याल है विवेक तो जी? एक ये एपिसोड आता है पढ़ने में शाहजी अबाउट दिस ये जो आपका रमदान चालू होने का डेट्स होता है इसमें डिसएग्रीमेंट हुआ था बिटवीन औरंगजेब एंड विद इन द लीडर ऑफ द स्माइली बोरा कम्युनिटी. Now, what this guy did is, his day started a day before, I think, Vora's. So he started fasting a day before. So, what Aurangzeb did, he fed him to death, on that particular day when there was this day's disagreement between Ramadan. So that's a very, account that's not even considered very greatly within the. Our Ismaili Boras are Shias, right? If I'm not wrong. They're not Asna Shri Shia, but they are like, yeah, you can say basically they've got a Hazir Imam, which is no, so they're different from Boras. They even split from the Boras at some stage. So So they this is don't Bora have a community. I think Hazir Imam. Ismaili Boras. But they are closer हाँ to the Ismaili side of. Boras are a हाँ पर split. इस्माइली बोरा बाद So में वो स्प्लिट हुए थे शाहजी आई थिंक. मतलब वो आगा हाँ, कुली खान that is कुली post इमाम। Aurangzeb, right? At that time they were only Boras. Yeah, To the best of my knowledge, Ismaili Boras came in subsequently. I think that yeah, was not, exactly. So identified. that's another split end from the Ismaili community. So So Vivek, what is your opinion on Aurangzeb as a whole, and why did he destroy temples, and then why did he make new so ones? I'll tell So you. why did he commission some and uncommission some? Okay. So, in terms of, let's look him at as an individual, right? Now, he's the grandson of Akbar, right? I'm not missing out one ancestor here, right? Great grandson. Great grandson. Okay. So it's Akbar.
you know, Jahangir, who are Jahangir Shah Jahan. and Shah Jahan, and then him. Yes, okay. So he's a great grandson. One thing which is good about Aurangzeb is, with respect to, there are no accounts of him with respect to moral turpitude when it takes, into account women's. So his harem size was probably the smallest compared to, the Mughal ruling class of that particular point of time. But he was a radical, Muslim. So Akbar was, not so radical, but then again he was class A womanizer. He had a biggest harem, amongst the Mughals, and by the time it reached Aurangzeb, I think. Uh, Radicalization in the court as well as in the policy was probably at its peak. It was probably more than during Babur's days, in terms of, so there are accounts when he reached Mathura. Onwards from Mathura, he went to Varanasi, raised that city. Before Varanasi, so there are multiple accounts where thousands of, hundreds and thousands of temple and temple town was raised specifically for religious purposes by him. So, I'll probably just stop here and listen to others because I've just come in. I'm surprised, Vivek. You never didn't say that Akbar did love jihad. So Akbar was We have not a already. Muslim, Prashantji. So, love jihad, he can't do. So he didn't do Technically, love So jihad. Vivek pure Bhattacharya, technically. Okay, why do but you you think think Akbar could that have done love jihad? If he was a Muslim, then yes. Then it would be Okay. classified as love jihad. I mean, okay, Akbar was not to Muslim? That's interesting. Okay, but coming to Aurangzeb, was he a Muslim, Vivek? he was, of course, post Akbar, his son, so Akbar started a new religion altogether. So, if I'm not incorrect, the Imam of Calcutta at that particular point of time, or whosoever was the Imam of India, he got a sanction against Akbar from Constantinople to declare that he was not a Muslim. So, from a jurisprudence perspective, Akbar was denounced as a Muslim by the, you know, caliph, or, the Muslim clergy across the globe, and there was consensus around that. Actually, Vivek ji, that is not true that there was a consensus around that. He came up with Deen-e Ilahi. Deen-e Ilahi was not a religion, but yes, it was extremely controversial. I would But agree, at and that there particular were point people. of time, the seat of Islam was Constantinople, and they declared together So with the Imam of Vivek it, ji, No, when that's not when true. that he was not a Akbar Muslim. started Dine Lai, do you remember the hashtag that they ran? Hashtag that he had. I was not on Yeah, social media at that you वो particular remember point of पत्थर that पे time. लिखा हुआ था. हैशटैग नॉट माई hashtag? इलाही, The hashtag क्या था? हैशटैग नॉट माई। मतलब Not पूरी my. दुनिया में कंसेंसस था ये कास्ट। नहीं नहीं, हाँ, पूरी पूरे दुनिया दुनिया में में नहीं। कंसेंसस था देखिए, यार. हाँ, नहीं, अब देखिए, जैसे आपने कोई क्या कहते हैं। हैशटैग तो देखा ही होगा ना, याद होगा हाँ, आपको कोई पर हैश हैशटैग। नहीं, उस समय के जो हैशटैग थे, तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इफ द नाउ ही इज इमाम यूज्ड टू से, कंटिन्यूइंग विद इट। with Imam of Calcutta or whatever, he took a sanction. So most of the time, अगर आप ये देखिए, आज भी इंडिया में, जैसे अभी वो जो हजरत बल की दरगाह थी in 70s, I think they used to house a, hair of the prophet, right, that got lost. And to sanction that, they had to get somebody from, Saudi, to say that, what was found again after getting lost was actually the hair of prophet. So, normally the ये जो इजिप्ट की आपकी करंट सीट है, जो सऊदी की सीट्स है, even Akbar was the first one to stop paying Constantinople, the due share of, matlab he basically broke away from the global Islamic, quote unquote, rule. Tip before him, I think Babar as well as his Akbar's father used to, मैं थोड़ा सा एक ड्रिंक मैंने पी हुई है तो मुझे नाम थोड़े से कम याद आ रहे हैं.
वो लोग लगातार कॉन्स्टेंटिनोपल को वो भेजते रहते थे क्या कहते हैं पैसे कि दे आर पार्ट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, बट अकबर हैड स्टॉप दैट प्रैक्टिस। 1 बजने जा रहे हैं विवेक जी, 1 बजे तक आपका एक ही ड्रिंक हुआ है। हाँ अब यार अब एक ही दो वाला हूँ। तो विवेक जी थोड़ा हम्बल हो रहे थे। आई डोंट नो विवेक जी, आपने जो बोला मैं तो वैलिडेट नहीं करने वाला। नहीं आपसे मैं किसी को वैलिडेशन करना मैंने है कर मैंने लें यार। मैंने मैंने कहा भी नहीं कि प्रशांत जी आए और मेरी बात को वैलिडेट करें। अच्छा, आपको चलें जो मतलब चलें जबरदस्ती मतलब so स्विमिंग far पूल में we've कूदना है। discussed how he came into power, सारे narratives and everything else. We haven't gotten into Punjab. Punjab seems to be a very interesting area when it comes to Aurangzeb. And that is something which still hasn't been touched, apart from the fact that under Shah Jahan, the person who was the crown prince was Dara Shikoh, and Dara Shikoh was the person who was in charge of Punjab. Punjab, even at that time, was very influential when it came to agriculture, whatnot, collecting money, and obviously it borders right next to what is today known as KPK and the Inquisitions, and it was a gateway to Central Asia. And that's where most of the invasions happened from. That was where where the change came from, including it was a gateway of trade at that time. uh, So what exactly happened with the rebellion of the Sikh gurus at the time? Were Sikhs considered to be a religion at that time? And why does the Sikh community? I would have loved if somebody from the Sikh community was here to basically come and speak in regards to that. What was the main contention they had with Aurangzeb, Vivek ji? मैं बता सकता हूँ क्योंकि Definitely. शाहजी हाँ, मोस्ट ऑफ बताएं। द गुरुज बिलोंग टू माय कम्युनिटी सो आई कैन टॉक अबाउट इट। So but I just wanted to add one more point in the earlier discussion. Akbar, when he introduced Deen Ilahi, apart from himself, Birbal as well as Salim, who was his son, was the first converts to Deen Ilahi, the first two converts to Deen Ilahi. Subsequently, when Salim took throne, the again the imam जो हिंद का जो वो था, head of religious affairs, I'm forgetting the title. He had to baptize Salim back into Islam again, because both at that particular point of time, not only Akbar but as well as Salim were discarded from Islam. So just adding to the earlier one. That was very brief, Vivek ji. Are you not familiar with the whole Gobind Singh and चलें शिवाजी महाराज के साथ तो एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो डिफरेंट तरह का था, but there are executions of Sikh gurus by Aurangzeb. Yes, that's true. Before Guru Gobind Singh, it was actually the first one to be executed was Guru Tegh Bahadur, if I'm not wrong. No, Again, Arjun. Guru Arjan Dev, yes. Yeah, by Uh, Jahangir, I guess. by Jahangir. And subsequently, but we were talking about Aurangzeb. I think Aurangzeb was the one instrumental into having Guru Tegh Bahadur executed. And that then so the Mughal at that particular point of time, they were largely, the gurus never used to call it. It was Guru Gobind Singh who actually, which is the 10th guru, who said or who created an order. When I say an order, he recommended Religion, so a distinguishment from a everyone else, distinct let's say. it wasn't a distinguishment but more of an identification, that if you have to be part of this club, these are the Distinguish few होंगे तो things that you have आइडेंटिटी to, बनेगी yeah, ना, वरना तो नहीं बनेगी। identity bani, ha. So it's more like if you are into an army service, you would wear this clothes, you would carry yourself like So this, Vivek ji, and just so on before and so forth. you elaborate on that,
What was that community referring to themselves at that time? मतलब अगर हम उनकी थोड़ा से हिस्ट्री के अंदर जाएं, were they already referring to themselves as So Sikhs? I'll tell you, Shahjahan. Had Guru Granth I'll Sahib been conceived at So that it would time? be a crude example, but you can draw a parallel from the modern word. Sikh is what? Sikh is Talib, right? A Yeah, disciple. yeah. Okay, so it's exactly what it's incorrect to compare it with Taliban, but then again, that the order was similar. That they were part of Islam, but they had a specific focus. So similarly, they were part of Hinduism, but they had a focus. So if I But may, but if you look at the Granth Sahib, and even if you look at Tej Bahadur and other gurus, they did not basically adhere to be Hindus even at that stage. It was a mixture of a lot of influences. So No, would you not I'll tell say? you, Would you Shahjahan. not agree? हाँ मैं उसका भी एग्जांपल आपको देता जी हूँ. जी So let's say the ISIS and the its fighters, right? They say they are Muslims, but Muslims don't believe them to be Muslims, or most of the fatwas have come against that these guys are not Muslims, right? So it is some kind of similar situation that there is an interpretation, and subsequently if you look at the Guru of Arya Samaj, he also came and interpreted on the work of the gurus, and identified that there are when you talk about Guru Granth Sahib, while it is holy to most of the people in India, but it's not exactly a commentary on Hindu text, because the persons who were making those commentary were not trained in a particular order to comment on Hindu text. So, जैसे आजकल आप बोलते हो ना कि आईसिस वालों का इंटरप्रिटेशन कुरान का सही नहीं है, वो वैसा नहीं तो आप समझो. क्या हाँ कह रहे हैं कि सिख लोगों का हिंदुइज्म का हाँ इंटरप्रिटेशन सही सही नहीं नहीं था. था? हाँ, तो जो सिख गुरुज का हिंदुइज्म पे जो उनका अपना थॉट प्रोसेस है, जो उनके यूनिक थॉट प्रोसेसेस हैं, अब उन्होंने दे आल्सो कमेंटेड ऑन कुरान, दे आल्सो कमेंटेड ऑन बाइबल, राइट? दे आल्सो कमेंटेड ऑन Then हिंदू if that डॉक्यूमेंट्स. was the case, why did या the Hindus support them against Aurangzeb and the सो आई Muslims? टेल यू सो अगर इन अगर उनका इंटरप्रिटेशन ही सही नहीं था, मैं आपको बता रहा तो हूँ. why हाँ why for हाँ centuries? मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ ठीक मैं है, आपको बता रहा हूँ. they were मैं supported blindly. No, अब मैं यहाँ तक बताना चाहूंगा लोगों को who don't know. So there was a tradition where the eldest son of certain Hindu हाँ families would हमारे खत्रियों में ही basically सही. make their हाँ elder son a Sikh. तो वो अगर आप इतनी बड़ी आइडल, हालांकि मैं मुसलमान हूँ, but even then and what we're talking about goes against Muslims in that way, but I think that is intellectual dishonesty on your part कि आप सारे सिखों को आइसिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं. मैंने इसीलिए ठीक है, पहले कहा था क्रूड when एग्जाम्पल है. clearly हाँ आपकी पूरी community, the entire Hindus in that region were basically in support of the Sikhs, and they provided their elder son in many occasions to become a Sikh. this is wrong How does actually. that even make This sense? is not हाँ मेरे ख्याल से historically आप जो accurate. आर्ग्यूमेंट. हाँ एक एक लेकिन पॉइंट ये शशि मुझे बोल रहे तो शाहजी जो आईसिस का कंपैरिजन मैंने करा था, जो आप कर रहे हो वो थोड़ा या तो आपको समझ में नहीं आया या आप आप इंटेलेक्चुअली explain करें डिसऑनेस्ट हो ना, रहे आप हो. explain. हाँ ठीक है ना. तो मैंने आपको केवल ये बताया था कि एक इकोसिस्टम है जिसकी एक थॉट प्रोसेस है, जिसको ब्रॉडर इकोसिस्टम एग्री नहीं करता, लेकिन वो थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जैसे कि तालिबान, राइट? ब्रॉडर इस्लामिक समाज नहीं एग्री करता. आईसिस है, ब्रॉडर इस्लामिक समाज नहीं एग्री करता उनकी फिलॉसफी से, पर वो एग्जिस्ट करता है. तो दैट्स द लिमिटेड एग्जांपल आई गिव, नॉट टू से दैट सिख्स आर इक्वल टू तालिब्स और सिख्स आर इक्वल टू आईसिस, राइट? Okay, सो I'm glad you हाँ हाँ clarified it. अब आप yeah. आगे. So I when I initially made that point also I clarified, but I think No, no, you I did uh, not. I wanted to make हाँ sure हाँ so बस it's बस हाँ clear to the audience as well. audience हाँ Now there is no doubt he's not calling them हाँ. extremists. So अब no one आगे is आप बात. calling them So what? extremist. Yeah, How हाँ did the हाँ story हाँ. progress? So the only extremism in religion order we have seen so far
is in Christianity and Islam that we have seen, but otherwise religious extremism we have not seen in any of the Indic faiths, Shahjeh. So if you pull up the history, any Indic faith for that matter, you cannot associate with extremism. That's what historically is established, well established. Few minor things here and there, but broadly. So, in no way or form you think that any of the Sikh inquisitions, or even in recent times, the Sikhs of any kind have been extremists, No right? Indic faith have ever been extremist, Shahjeh. None of them. विवेक साहब आप श्योर हैं कि आप ये फिर 100%. खालिस्तानियों के पीछे ना 100%. पड़ा करें ना? Uh, That was out of context, No, but no, but खालिस्तानियों के पीछे Shahjeh, ना पड़ा you're करें ना? talking about religious spewing hatred, हाँ right? हाँ आगे So चलते that's हैं. only the I think yes, othering, ha. So that is only confined to Christianity and Islam. None of the Indic faiths have this. that's See, fine, you but have to not understand, exactly ha. talking I about think So religion. whether That's it is a Sikhism, story for whether it is another day. Sikhi, whether it is Hinduism, whether it is Buddhism or Jainism, Mhm. none Get have it. resorted to That's So extremism. fine. That That's would be fine. a lie because I once again in 1920s you see the RSS rising up and they were inspired so from the uh Sir, you you forgot know to add Judaism in the Zionist list. Huh. Uh, मैं इंडिक फेथ्स की I बात was कर सकता हूँ actually पर हाँ like But हाँ no then, no Hinduism is an Indic एक faith सेकंड faith I'm मेहर talking को about. बात करने दो. So किसको बात करने दो. what about it? what What about about what them getting involved? What about Hinduism getting inspired from Hitler's No, ideology in the Hinduism was not 1920s? inspired by Hitler's ideology. Hitler came from No, it Christian was. ecosystem. No, it was not. So where you have to What makes you think so? understand, No, no, no. Wait, No, wait. are What we makes? are we are we justifying RSS at this No, no, no. What made you think so? RSS Actually, got nothing to do with it. RSS has nothing to do with RSS Hinduism. is a social organization. point? No, they do claim themselves to be that. See, at the time, let me tell you one thing. At the time, with the permission and actually the promotion and the complete facilitation of the British, you would find that there were certain organization who did do trips to Germany. That includes the RSS and the Congress's Sevadal. Okay, it did not have anything to do with fascism. It was just like a field trip or something like that. And it was sponsored by US at that particular Yes, point yes, of time yes. because the US people were also in Germany engaging with the same set of individuals which Indians were engaging with. With the complete permission of the British government at the time, which later also fought against the Germans. So yes, the political movement that existed in the early 1900s did not have anything to do with Hinduism. In fact, it was on the opposite, right? Because there were multiple reform movements that were coming up, and reform, as you know, is not necessarily related to religion. In fact, it is moving away from religion, right? So yes, as for the previous discussion that was happening around the execution of the Sikh gurus, and I would actually want, I hope that there is some Sikh who can come up and deny this, not deny but basically counter this, because this is not, these are not my words. These are the words of Sayyid Ghulam Hussain Khan, who also wrote another source of Muslim Mughal history, that is Sayyid Mutakirin, right? And this is a translation by uh, I am not getting the I am forgetting the name, but this is a translation of Sir Mutakirin, and this is uh, hmm, from Nanak was Angad, and from this one Angad was Guru Tegh Bahadur, who was one of such an extraordinary character, as drew multitudes after him, all which, as well as their leaders, went always armed. This man, finding himself at the head of so many thousands of people, became aspiring, and he united his concerns with one Hafiz Adim, a Musalman fakir. So Guru Tegh Bahadur aligned himself with a Musalman fakir named Hafiz Adim. He also had some following, and one of those that styled themselves of Shah Ahmed Sarhindi's fraternity. So this is Sheikh Ahmed Sarhindi again, right? He calls him as Shah Ahmed Sarhindi. These two men no sooner saw themselves followed by multitudes, implicitly addicted to their chief's will, than forsaking every honest calling. They fell they fell a subsisting by plunder and rapine,
So rapine is not rapes actually. Rapine is basically plundering, right? Like he's using this the same word. Laying waste the whole province of Punjab, for whilst Tegh Bahadur was levying contributions upon the Hindus. So Tegh Bahadur was given the role of levying contributions or taxes upon the Hindus, while Hafiz Adim was doing the same upon the Mussalmans of Punjab. Right? Such excesses have soon attracted the notice of the crown officers, gazetteers and intelligencers. तो उस टाइम पे स्टेट अथॉरिटीज और स्टेट के जो वो थे उनको ये पता चला. They wrote to the emperor Aurangzeb that these two men made it a practice to live by plunder and sack. In answer to such an advice, the emperor commanded the viceroy of Punjab, residing at Lahore, to seize these two miscreants and to send the Mussalman to the country of the Afghans. Acha, quite interestingly, because this Mussalman, if I wonder what would have been the case if this Mussalman did not belong to the order of Sheikh Ahmad Hindi, right? So he was basically asked to move and send the Mussalman to the country of the Afghans, quite up to the last limits of Hindustan, beyond the Attock, with defense to him to cross it again under the pain of death. That is, if he crosses it, the boundaries of beyond the Attock, अगर वो Attock के किसी भी तरीके से eastward कहीं पे भी दिख गए, तो he will be executed. That was the threat that was given to him. So he was in permanent exile. तड़ी पार कर दिया था. Tegh Bahadur, the other freebooter, he was to send prisoner to the castle of Gwalior. The governors executed his orders punctually. Some days after there came an order to the governor of Gwalior to put Tegh Bahadur to death, to cut his body into 4 quarters. तो 4 हिस्सों में काट दो बॉडी को. यूजुअली हम इस वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन में लिखते हैं, बट ऑब्वियसली दिस वाज एक्सप्रेशन. जैसा कि इनके क्रोनिकर्स ने बताया है, as they it is understood that this was an expression, not how you are supposed to literally do it, but the executioner actually conducted the whole sentence literally. So he actually cut him into 4 pieces, to cut his body into 4 quarters and to hang them at 4 gates of the fortress, a sentence which was literally executed. But this execution was followed by mournful consequences. Hitherto the Sikhs had always worn the religious garb without any kind of arm or weapon at all, but their guru, Govind, having succeeded to his father, attributed his numerous followers by troops which he put under the command of his best friend, to whom he gave orders to provide them with arms and horses. So हाँ, तो मतलब यहाँ पे आपके फिर आपके गोविंद सिंह जी की जो है वो अकाउंट्स आ जाते हैं. So this was the perception of Guru Tegh Bahadur in the courts of Aurangzeb. So this is a historical source actually. So I would actually want that a Sikh can come up and provide a counter historical source, because this does not really coincide with their narrative, right? Another thing is that see, और ये शायद यहाँ पे मुस्लिम्स हैं तो इनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा. अगर आप हिंदी में कभी शिष्य लिखते हैं ना, शिष्य, तो आप वो जो है एक प के जैसा जो श लिखते हैं, तो एक्चुअली इसको प्रोनाउंस आप जो है पीछे से करते हैं, राइट? आपके जो मतलब देयर इज वन, द शिष्य इज जिस तरीके से हम बोलते हैं, दिस इज अ कॉन्सोनेंट दैट इज लॉस्ट इन प्रोनाउंसिएशन. सो वर्नाकुलर में दिस कॉन्सोनेंट एक्चुअली गोज शिष्य, तो शिष्य की जगह सिख हो जाता है, राइट? आप देखेंगे षटकोण वाला जो श है, इट बिकम्स खटकोण. तो श का जो ख है, उस वाले श का, स्पेसिफिकली शिष्य वाले श का जो ख है, वो श जो है वो ख में चेंज हो जाता है. सो इट इज जस्ट शिष्य इज जस्ट सिख, राइट? दिस इज वाई गुरु एंड सिख, गुरु एंड शिष्य. So this concept they have taken from Hinduism only. The whole concept of Sikh is actually from Hinduism, and Sikh was not exactly a religion. In original terminology, Sikh was not exactly a religion. It was just a specification of disciple. जैसे कि आंदोलन जी ने बताया, उन्होंने तालिब बोल दिया, थोड़ा सा controversial हो जाएगा, because before Taliban existed, Talib was actually a good thing, right? So तो Yashas, तालिब नहीं कहें तो शिष्य कह लीजिए, है ना? तो शिष्य की तरह जो तो सिख हो गया था. So basically the disciples. So like any other Hindu order, all the followers were considered to be shishya, and similarly this was also the case with this. However, the Sikhs later gained political you can say agency. They gained political sovereignty, and with that they also created their own polity. And then since the need was followed, तो उन्होंने अपना एक
डिस्टिंक्ट रिलीजन भी बनाने की पूरी पूरी सो कोशिश तो करी है, यशस्वी, एंड मैं आई थिंक नाउ दे आर मजाक मजाक सक्सीडेड. में Yashasvi, क्वेश्चन if I may. पूछता हूँ ना लोगों से कि अगर सिख इज स्टूडेंट, देन हु इज द गुरु, राइट? अच्छा तो यशस्वी, हाँ, नहीं यशवी अम्बेली साहब, जी कंप्लीट एक कीजिए। छोटी सी अच्छा बात अली भाई, मुझे ऐड छोटा कर सा लेने पॉइंट, दें। छोटा सा पॉइंट अश्विन अली सर, भाई। अश्वसी जी, हेलो, आप कर लें पूरी जी, आप हाँ, कर लें। यशस्वी, so you were reading something, so he was executed just because he was taking some taxes, Yes, he was, because he was not authorized to take and taxes, was na? the Muslim fakir, he was also executed. The Muslim fakir, because he belonged to the order of Sheikh Ahmad Sir Hindi, which was at that time the primary dominant religious order. अब क्या है कि अगर वो शेख अहमद सर हिंदी के ऑर्डर से नहीं होते तो मोस्ट लाइकली ही वुड आल्सो हैव बीन एग्जीक्यूटेड लाइक अदर फकीर्स और अच्छा, अदर मुस्लिम ऑर्डर्स. बट क्योंकि ये शेख अहमद सर हिंदी के ऑर्डर से बिलोंग करते थे, हाफिज अदीम, because he belonged to the order of Sheikh Ahmad Sar Hindi, he was asked to go beyond the attack, and if he returns back, he will be executed. That was the condition that was put on इसके him. अंदर एक पॉइंट नोट करने वाली शाहजी, बात है ना, हाँ ईस्ट बोलिए। ईस्ट होल्ड ऑन, I want to add something to what Yash has said. And the fact is one of the huge things, you might think it was a political ploy or he actually believed that the whole image of Aurangzeb is as a ruler, and his construct and his justification to of basically killing both his brother and then including his own father was that he wanted to basically bring back the refinement of Islam for the Muslims in that way, and he wanted to rule in that way, and he made no qualms about that. He was very straightforward in those things. So whether it was a Muslim or a non-Muslim, if there was a disagreement in terms of what he perceived to be correct, that was by either that was just eliminated, whatever came in his No, way, but where he was used it. that the case? Was that always the case? Because many a times you would find that many people were doing completely good service to him. For example, there is वो a monk. negotiation था Initially, ना, he did very good that was service. part and parcel. So he was okay with the there's a second part to this where he was very vocal, और उसके फरमान के अंदर भी ये चीज थी when he first took Rhine, that people should basically not begin to follow each other. They should be well distinguished and yet abide by certain rules and regulations and can be different at the same time. Sure. तो ये जो social it sounds it will sound weird to some people, but that's also there. No, but for example, the Afghans, right? The Afghans were at that time mostly Naqshbandiyas, है ना? But since they did not follow the polity of Aurangzeb or the Naqshbandiyas at his court, the kind of oppression and the kind of atrocities that he committed on the Afghans, right? It had become like a hot topic in Kushal Khan Khattak's poetry, who happens to Yeah, be the national exactly. poet of That Afghanistan, coincides with that thing. It was a disagreement, right? right? A So theological disagreement. I would provide a contrary point to this, that whether he was religious because he was religious, or he was religious because he wanted an excuse to grab power. So hence, And yeah, yeah, yeah. his later apologists belong to almost the same sect, because we have to understand that modern Indian Deobandi movement has come out of Shah Waliullah Dehlavi, who also happens to be the son of Shah Abdul Rahim, who under whom the Fatwa Alamgiri was compiled, right? But Right. again, So देखो ना, अच्छा अच्छा, यार, थोड़ी सी मुझे 2 लाइनें आप करेक्ट करने एक के लिए एक दे दें, आप सेकंड कर अली लें भाई. बात, फिर मुझसे ले So लेंगे। when I began my conversation, I basically said that as well, and I reiterated that, and I'm going to repeat that. The fact of the matter is that whether he used it as a political tool when it came to religion, or whether he actually believed in it, that can be contested. But it was a huge element, and anywhere he could use it, he used it. Would you agree? Yes.
No, but the way, see, if we is torture the kind of torture that he meted out to Sambhaji, is it permitted in Islam? It's not, but that's what I'm saying. At times there He were also atrocities. desecrated his body. I तो mean, तो imagine he वो also कोई desecrated his religious body. आदमी इस it was an image he was building around him. How close he actually was to that image can be contested, and that can be open to perception, right? Yes, absolutely. He also killed his firstborn. Exactly. He also killed his sons. I mean, we usually talk about what he did to his brother and his father, but we also, at the ripe age of 60, he was executing his sons. अच्छा Imagine यार, that. थोड़ा सा एक सेकंड यशवी साहब, काफी बातें चल गई हैं, फिर मुझे भूल नहीं जाए, और इम्पोर्टेंट बात थी, मुझे इंटरप्ट करना जरूरी था, मैं कर नहीं सका आपको, अब थर्ड ट्राई की है। देखिए, मैं दो चीजें अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखें। मैं थोड़ा लेट भी आया हूँ, लेकिन काफी देर से मैं इन एंड आउट हो रहा था, मुझे अंदाजा है। दो चीजें स्टेज पे कही गई हैं, उससे थोड़ी सी मेरी एक क्लब हाउस के तरीके से आपसे गुजारिश है कि अगर मुसलमान या हमारे हिंदू भाई या कोई भी बैठ के ये डिसाइड करना शुरू कर दे कि सिख रिलीजन क्या है, सिख किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो प्रैक्टिकली अनफेयर होगा, वो मुनासिब नहीं है। ये सिख डिसाइड करेंगे कि उनका यार रिलीजन अली क्या भाई, है, ये आइडेंटिटी किसने क्या है। किया है? नहीं, एक अली मिनट, भाई, नहीं, एक सेकंड, मैं ये किया बताता नहीं, एक किसने है? मिनट यार, एक मिनट आप बात हर तो सुन वक्त लो। आके ये देखें, नहीं आप यार, पहले ये बताएं, बात तो यार पॉइंट सुन आउट ले दो करें ना, कि तुम तो किसने बैठे किया हो ना। निशाना लगा के कि अली भाई ने बात करनी है तो मैंने उनको नहीं इंटरप्ट अली करना, भाई, उनसे पता है बात क्या, करनी है। आप सब्र पता है करो, क्या, मेरी बात मैं सुनो। बस आप बात क्वेश्चन करने करना दो, चाहता आप हूँ, बात सही करने दो, तरीके से बताएं ना मुझे कि बात किया कंप्लीट करने किसने। दो, जी जी, मुझे आप करें, बात आप कंप्लीट करें। कर लेने दो, मुझे बात कंप्लीट करने दो जी, थैंक यू। बात ये है कि जैसे पहले अश्विन ने कहा कि जैसे बड़ी अच्छी वो टेक्स्ट की या उसकी वो अच्छी वो इंटरेस्टिंग वो अल्फ़ाबेट्स की एग्जांपल दी कि शाह का वो उसमें वो शीन का वो जो हो है वो सिखी का है, और सिख कोई अलहदा कॉन्सेप्ट नहीं, इस तरह करके का, तो मुझे उस वजह से ये कहना पड़ा, नहीं तो मैं ऊपर नहीं था ना। एक तो मैंने ये कहा कि ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर है हम मतलब हम तो अपने रिलीजन में रहेंगे तो हम तो चाहेंगे कि हमारे रिलीजन की बात और उसमें हो, लेकिन फिर ये है, क्लब हाउस का भी दस्तूर है, ये जनरली कन्वर्सेशन का भी है कि ये उनका काम है डिसाइड करना। मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं ले रहा, ना मैं उनकी छीन रहा हूँ, ना दे रहा हूँ। ये उनका काम होना चाहिए हाँ, कि सिख कौन है, सरदार कौन है, ये वो एक डिसाइड एक करेंगे, काउंटर हमने में नहीं दे दूं, करना जी। एक बात एक काउंटर में जी दे दूं अली भाई। No, जी, एक हाँ जी, सेकेंड आप एक दे दो सेकेंड बिफोर जी, आप एक्चुअली दे दो। स्टार्टिंग यश भैया ने कहा था कि if anybody from the audience who belongs to the Sikh community wants to come and have a counter argument, then we are completely open for that. So we did not actually try to make an absolute comment on that. और मैं इसके जी, अंदर मैं एक और एक विवेक काउंटर देना साहब, एक चाहूंगा। सेकंड ना यार, यहाँ पे थोड़ा मसला हो जाएगा। देखें अली भाई, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो हम आपसे सिखों की जो दिल आजारी हुई है उसकी डिसरिस्पेक्ट के अंदर ना आपसे माफी मांग लेते हैं। आपको भी हम सरदार ही कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज जी यू जी कम जी एज जी, अ आप वो रिप्रेजेंटेटिव। कंसीडर दैट करें, वाज मेरा अ एक जोक, दैट वाज अ जोक, आपने तो दैट वाज अपने अ बड़ों के जोक। पूरी बात सुन लेना। अपने दैट बड़ों के कातलों के साथ मिल गए हैं, तो मैं तो नहीं मिला, तो मैं तो ये यार कर अली सकता भाई, हूँ ना। पहले ना पूरी बात नहीं, सुन ले, आपको पहले पहुंच गई पूरी है, बात जहां सुन ले। बात पहुंच रही थी वो यार पहुंच अली गई है, भाई, अब पता है मैं क्या, आपकी बात आप प्री सुनूंगा। डेस्टिन्ड आए हैं, आप एक्यूज करने के लिए ना आए, ठीक है। आप प्लीज बात सुन लें, ठीक है। यहाँ पे अगर ये रूम रिकॉर्डेड है, इसको स्टार्ट से सुने, ठीक है। इसके अंदर मैं जो एक छोटा सा उस काउंटर देना चाहूंगा। एक सेकंड विवेक भाई, एक सेकंड रुक जाएं विवेक साहब, ठीक है। अली भाई, ये जो अभी आपने चीज मारी है, आप पिछले दो रूम्स जो हैं वो हमारे रिकॉर्डेड हैं, उनके अंदर आप सुन लें। सिंह गिल वाज इनवाइटेड, ही इज कमिंग इन अ बिट, ठीक है। मेरी उससे बात भी हो चुकी है। यहाँ पे सिखों के बारे में कोई गलत बात नहीं हुई, और जो यश ने भी एक्सप्लेन किया था, उसने वर्ड सिखी को एक्सप्लेन किया था कि उसका ओरिजिन क्या है। सो सिख रिलीजन को यहाँ पे कोई डिफाइन कर भी नहीं रहा, ना हम कोई होते हैं सिखों को रिलीजन को डिफाइन करने वाले, और ना हमारा कोई सिखों के साथ एज सच हटा है। तो आपको गलत फहमी हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमने हिंदुओं के बारे में हम औरंगजेब को डिस्कस कर, उसके अंदर इस्माइली आए, उसके अंदर शिया आए, ठीक है। इस्माइलियों की भी कोई नहीं था यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर औरंगजेब आया, उसके अंदर हनफी आए, मालकी आए, शाफी आए, उसके अंदर हिंदू आए, मराठा आए,
ठीक है, उसके अंदर एक एस्पेक्ट, वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी स्टिल हैवंट आस्क्ड फॉर इट, लेकिन देयर वर वॉर्स बिटवीन औरंगजेब एंड द पंजाबीज, even before it became a war between Sikhs and the Muslims at that time. उसके अंदर औरंगजेब के टाइम के ऊपर इस्लामिक डोमिनियंस के बीच के अंदर भी, सेक्ट्स के बिटवीन भी काफी रिबेलियंस हुए. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ कैरेक्टर, अब ओडरे टुस्के तो ना मुसलमान है, ना वो हिंदू है, और ना वो सिख है. She's the most well-known person in recent times who has spoken about औरंगजेब. तो आपको जिसने भी, अली भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, जिसने भी आपको कोई प्री डिटरमिन्ड चीज आपके दिमाग के अंदर फीड की है, ठीक है, उसको अपने दिल से निकाल दें. टाइम विल टेल. जिस दिन हमने किसी अपने पैनल के ऊपर किसी मजहब को जलील करने की कोशिश की उस तरीके से, चाहे वो कोई भी मजहब हो, या हमने उसके अगेंस्ट बात करने की कोशिश की, तो आप प्लीज कंप्लेन कीजिएगा, मैं क्लब हाउस छोड़ जाऊंगा. ठीक जी, है, मैं एक तो छोटा सा उस काउंटर उससे देना उससे चाहूंगा। पहले तक, उससे पहले तक आप प्लीज थोड़ा सा काम डाउन हो, रूम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें. नहीं, मैं काम डाउन हूँ आप आपको मैं। पंजाब से जी बिलोंग सी। करते हैं, पाकिस्तान के अंदर. अच्छा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने अच्छा लगा हूँ, नहीं, आप क्वेश्चन आपके पाकिस्तान से क्वेश्चन से बिलोंग पहले एक सेकंड, आपके क्वेश्चन से पहले जो आपने डिटेल से बताया, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि यशवी मेरा छोटा भाई है, उसने एक बात की कि वो सीख के शीन की सीन से सीखी है, और उसमें से एज सच एक जुमला यहाँ बोला गया, रिकॉर्डिंग अगर आपकी ऑन है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि उन्होंने एकेडमिकली बात की है, तो मैंने एज ए मतलब उससे, डाइवर्सिफाइड अली अली ओपिनियन भाई, मैंने उस उसने बात से उसने लेके यार सिख एक मिनट बात, वर्ड यार के छोटी सी बारे में यार, बात की है, मैं सिख उसी वर्ड की के बात कर बारे रहा हूँ यार, मैं भी वही में. कह रहा हूँ तो सिख कि का वो मतलब वर्ड की सिखी बात। से नहीं निकला, आप मुझे यार बताएं उसका बात तो, मतलब और यार सीखना नहीं है. बात तो उसने मेरी भी जान यही बात बात तो कही है सुनो, कि सीखना है उसका ओ मतलब. मेरी जान गलत यार सुन लो ना, बात तो पूरी कर लें दो। उसमें उन्होंने इसी लाइन में दोहराया, मुझे पता है यशवी को मैं जानता हूँ, हमने कितनी कोलैबोरेशंस की हुई हैं, जानते हैं उसको, मुझे पता है वो कहाँ से आ रहा है। मैंने वो डाइवर्स ओपिनियन ज़रूर देना था कि ये भी एक राय है, क्योंकि उसमें सीखी को सीख के ये रिकॉर्डिंग है, इसमें इस तरह कहा कि इसलिए मैं ऊपर आया था। एक बात, दूसरी बात, अब दूसरी बात भी है, दूसरी आपने नक्शबंदियों को अफ़गानियों से जोड़ा यशवी साहब, थोड़ी इसके ऊपर एलैबोरेट कर दें कि नक्शबंदी तो सिलसिला जो चलता है, वो तो इधर से निज़ामुद्दीन औलिया साहब और ऊपर से बाबा गुलाम फरीद साहब से, और उसके बाद आता है, तो उनका अफ़गानियों के साथ कैसे आपने वो जोड़ा, थोड़ा-सा अली मुझे भाई, उसमें ढूँढ के देना। अली जी। भाई, इसका मैं आपको मैं एक एलैबोरेट छोटा करके काउंटर बता, देना नहीं नहीं, एक चाहूंगा। सेकंड विवेक भाई, विवेक भाई एक सेकंड. अली भाई, इसका मैं आपको एलैबोरेट करके, आप सही कह रहे हैं, दैट इज द ओरिजिन ऑफ इट. ठीक है, गिव एंड टेक. उससे पीछे चले जाएंगे तो और जगहों का भी आपको जियोग्राफिकल लोकेशन मिल जाएगा. we're talking about the general populace and what they believed in at that time. और उस वक्त के अंदर अगर आप मेजोरिटेरियन केपी के जो आज इराका कहलवाता है, ऑल द वे अप टिल पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, देयर वाज अ ह्यूज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नक्शबंदिया सिलसिला. तो इसको स्टडी भी करना चाहिए, यू प्रोबेबली नो अ लॉट ऑलरेडी. ठीक है, उसके अंदर आपको वो मज़ार मिल जाएंगे. मैं आपको नाम अगर कहते हैं तो मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर, 5-10 minutes, I've got them somewhere. I अच्छा, can यहाँ पे basically कोई provide पश्तो you with पढ़ all सकता the है क्या? references that पश्तो you पढ़ might सकता है? require. देयर इज अ वर्ड इन पश्तो दैट आई हैव मेंशन्ड इन द चैट्स. कोई यहाँ पे पढ़ के बताए तो उनको समझ में आ जाएगा. तो ये श, ये कौन सा वाला श है? इट इज़ द फ्रिकेटिव श, एस एच का जो साउंड है. तो ये जो है आपका यूजुअली, ये फिनेटिक्स का रूल है. मैं यहाँ पे सिखों को वो नहीं कह रहा था. मैं आखिरी वाला जो ख है वो कहाँ से आता है मैं वो बता रहा था. द ख पार्ट एक्चुअली It कम्स. was a linguistic thing, यस right, यस Yash? यस And यस we यस. all understood. It was a origin of language. It has nothing to do with religion. हम्म, विवेक मैं भाई भी एक आप लाइन। बोले हैं, आपको दे हाँ, सकते हैं. मुझे अली जी की केवल एक बात से इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. है क्या कि आप क्या कहते हैं, यू हैव टू टॉक टू द एक्चुअल रॉयल्टी होल्डर रादर देन द फैन क्लब, राइट? एंड हियर आई एम सिटिंग एज पार्ट ऑफ द रॉयल्टी होल्डर. So all 10 Sikh gurus were Khatris. I belong to the same clan.
We know the warning of gurus as amended till date by other gurus also from the same region. And to assume that the fan club would take up the mantle of, interpreting Sikhi, Ali Bhai, so I would, blatantly disagree with that. ये हमारे क्लान हमारे फैमिली की नॉलेज बैंक है and nobody else can claim it. जी जी बिल्कुल विवेक नहीं नहीं खत्री नहीं साहब, नहीं एक नहीं सेकंड एक मिनट अली भाई, नहीं नहीं अली नहीं भाई नहीं वन यहाँ सेकंड प्लीज। शाह जी अली यहाँ भाई मेरा आप एक बन गया सेकंड ना काम मेरा डाउन हो वाजब जाए आ ना, गया ना मुझे 10 सेकंड लगेंगे। मैं विवेक यार खत्री मेरा साहब वाजब आ इसमें गया ना एक तुम कर सेकंड, लो अली खत्म भाई प्लीज, अली भाई प्लीज, थैंक यू। हाँ जी विवेक साहब, इसके ऊपर इस्लामिक पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट है। आप तो प्रॉफिट नोआ की आप स्टोरी अगर इस्लाम के पढ़ें, हिसाब से बात करें ना। सुन आप पहले हाँ मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। ठीक है, उसके अंदर नोआ का जो बेटा था, हजरत नूह का जो बेटा था, he was actually the blood and flesh of him, but we हाँ बट as वी Muslims आर नॉट गोना or इंटरप्रेट as एज पर इस्लामिक वे, राइट? इट इज एन सुनना, ये भी इंडिक एक वर्ड इकोसिस्टम, सुनना। इट वुड बी तो तो डिफाइंड एज तो पर इंडिक इकोसिस्टम। हम, हाँ, इकोसिस्टम हाँ का तो हम डिफरेंशिएशन है मतलब ना, तो हम हम उसके इस एक दिन बात में को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी थोड़ी ना अडॉप्ट कर लेंगे अपने को डिफाइन करने नहीं, के लिए। आप आपको अडॉप्ट करने के लिए कह भी तो नहीं मैं रहे, लेकिन मेरा हाँ तो कहने मैं का वही मतलब ये बता है रहा हूँ कि शाह एक जी, फैन को यहाँ इस पे चीज को समझे हिंदुस्तान ना। में फैमिली और लीनिएजेस से चीजें भाई, मूव होती हैं। विवेक भाई मुझे मेरा सेंटेंस खत्म कर लें तो कर लें दें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर बात क्या है कि यहाँ पे हमारा ओपिनियन आपसे डिफर करेगा, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव के बट ब्लड हाउ डज लाइन इट जो है मैटर्स शाह जी? वो आपको हाउ डज योर लेजिटिमाइज ओपिनियन करती है, मैटर्स? लाइसेंस योर देती है बट किसी चीज को, रॉयल्टी के अंदर उस चीज को, उस बट शाहजे आइडियोलॉजी भाई, को एक्सेप्ट करने या शाहजे क्लेम भाई, करने की, Why विच does यू नहीं डू your नॉट opinion एडहेयर matter, टू। नहीं नहीं, Vivek? एक सेकेंड शाहजे भाई, मैं इतना कह रहा हूँ Vivek, जो why does your एक सेकेंड opinion प्रशांत, एक matter? सेकेंड Can you प्रशांत, एक explain सेकेंड it? प्रशांत, एक सेकेंड होल्ड करो। अली भाई Baba, इसके why बाद does आप your अरे बोल यार लें opinion एक यार, matter? Let him प्रशांत जी, complete now. प्रशांत Because जी, it is अरे logical इस pressure. आप बोल लें। हाँ सो इन द इंडिक इकोसिस्टम शाह जी, आप प्रशांत से भी पूछोगे तो वो अभी यही आपको बताएंगे। यहाँ पे चीजें जो चलती हैं वो कास्ट लीनेज और परिवार से चलती हैं। किसी भी इंडियन से आप पूछ लो, जो इंडिक इकोसिस्टम है वो उस हिसाब से चलता है, राइट? तो अब मतलब मेरे दादाजी ने किताब लिखी तो उसकी रॉयल्टी मुझे मिलेगी। अगर मेरी दादाजी की किताब पे किसी ने फैन क्लब बना लिया तो उसकी थोड़ी ना किताब हो जाएगी। विवेक भाई, अच्छा इफ जी यू हाँ डोंट तो एक एडहेयर मिनट टू द यार अभी आइडियोलॉजी मुझे यू कांट रिवर्ट कर क्लेम इट। एक अली एक भाई हु सेकंड आप टोल्ड यू बोलिए। दैट आई नहीं डोंट नहीं एडहेयर That's टू यार द अली भाई आइडियोलॉजी? को नहीं बोलने एक दो। सेकंड uh, एक सेकंड एक सेकंड मेरी that's बारी अली भाई अली totally भाई को totally बोलने दो objective ना process. यार। जेंटलमैन जेंटलमैन मतलब यार एक मिनट इस्लामिक बारी बात इकोसिस्टम करने से दे थोड़ी ना इंडिक चीजों का फैसला ओ होगा। This यार एक Vivek मिनट Khatri is मुझे बात तो presenting a totally और मुझे बात faulty कर ले यार एक सेकंड यार यार मेरे अली भाई सामने को मेरे क्या बोलने नाम दो है आपने यार, बहुत अली भाई स्पीक मैन। देख मेरी बात सुन मैं छोटा सा बट मैंने जाना भी है मैं बस ये कहना विवेक साहब मुझे पता है आप कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं ठीक है तो आपने बाउंसर उसको देना था जिसको शॉट ना खेलनी आती होती तो आपको मेरी बैकग्राउंड का भी पता है अगर आप उस सर रॉयल्टी के पाकिस्तानी टीम कभी नहीं शॉट नहीं खेलने के लिए नहीं जानी गई, केवल बॉलिंग करने के लिए जानी गई मेरी है। जान बात तो सुन लो ना अभी तो खेलना है ना अभी बाउंसर खेलने तो दो ना आपको मजा आएगा बात तो सुने जिस शॉट बैकग्राउंड शॉट के लिए खेलने के लिए तो आपने इंडियन रॉयल्टी क्रिकेट टीम फेमस है। यार बात तो सुन लो ना यार मजा तो ले लो ना फिर ठीक है जिस अरे यार ये बैकग्राउंड की मेटाफर रॉयल्टी आपने समझिए ना। बताई है ना जिस बैकग्राउंड की रॉयल्टी आपने लेके वो खेलने की कोशिश की है आपसे 10 गुना वो वाली लॉयल्टी मेरे पास है मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ और जिस अली पंजाब भाई से आप हूँ और खत्री जिस नहीं सॉइल हो। से यार बात तो पूरी कर लेने दो यार ये टोकने की क्या बात है सबर करो इधर ही हैं, हम कौन सा जा रहे हैं ठीक है मैंने जाना है बात करके आपकी सुन के जाऊंगा अच्छा जिस बैकग्राउंड के ऊपर ने आपने रॉयल्टी ली है ना उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो वो बैकग्राउंड मेरी है ठीक है वो मैं उससे ज्यादा मैं सन ऑफ सॉइल हूँ उससे ज्यादा पंजाबी मैं हूँ उससे ज्यादा एरिया लेकिन वो रॉयल्टी लेना गलत है क्योंकि इसके बावजूद वो रॉयल्टी हो भी फिर भी वो जहाँ खड़े हैं उनकी उनकी शिनाख्त है उनकी आइडेंटिटी है उनके गुरु हैं हमें उनकी बात माननी है मैंने सिखिज्म सीखना है या कोई क्वेश्चन होगा या आइडेंटिफाई करना है मैंने विवेक साहब से या अली शबीर से या वो यशवी साहब से या शाह जी से नहीं प्रशांत से भी नहीं पूछना वो डिसाइड करेंगे बात ये हो रही है इसको खेल मुझसे के आप पूछेंगे के आप। के जी के गुरु भी मेरे थे तो वो कोई सेटिंग पर बनती नहीं है यार विवेक साहब अली भाई, बस हाँ होगी मेरी बात पूरी एक सेकंड, आपकी बात आ गई विवेक भाई। पता है क्या बात ये है कि ये रूम औरंगजेब पर के हाँ बारे में पर है, ये सिखिज्म के बारे में। हाँ, एक सेकंड प्लीज, आप दोनों की बात आ गई। आपकी बात आप मान सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर नहीं हाँ मैं इन्फोर्स हो इन्फोर्स नहीं सकती। कर रहा हूँ। वी वी हाँ तो ठीक है, आप अपनी ओपिनियन रखें।
ठीक है, but that नहीं doesn't make it valid. पर मेरे And secondly, ओपिनियन this को proof is डिसरिगार्ड करा not अली भाई ने। about हाँ तो एक 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। नहीं, तो वो ठीक है ना, वो उनका पर ओपिनियन मैं है, ठीक काउंटर है, ओपिनियन तो दे वो दूं। मेरा भी ओपिनियन है, जो जो नहीं उनका नहीं वो तो ओपिनियन है ठीक है, ना, वो वो मेरा भी बात आपकी ओपिनियन है। सही अ है, पर्सन पर बेसिकली, यू नो यहाँ पे सुन ले इतने ना, ऑडियंस भी बैठे देखे हैं। ना, हाँ देखे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर आपका सगा बेटा भी होएगा ना, अगर वो आपको कहेगा ना माइंड योर ओन बिजनेस एट सम स्टेज, आई होप दैट डजंट हैपन, ठीक है, और अब मेरी शादी हो गई है, मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, गो, ठीक है, आपका उसके ऊपर चाहे ब्लड और सारा कुछ है ना, यू कांट डू जैक शिट, आई तो नो, आप थोड़ा सा गलत बिकॉज आई एग्जाम्पल दे रहे हैं सीन इट। शाहजे जी। आप थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं शाहजे मैं जी, और बिल्कुल इसी ठीक में मैं कहता एग्जांपल हूँ दे कि रहा आप, हूँ, हाँ नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ शाहजे जी। मैं आपको एग्जाम्पल, जो आपने एग्जाम्पल दिया, आपने रिवर्स एग्जाम्पल दिया। आई एम क्लेमिंग माई एंसेस्टर्स, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, राइट? पॉइंट नंबर वन। तो अगर और कोई जो अपने लॉ भी है एंसेस्टर्स को इंडियन, रिजेक्ट सुन कर तो लो देता है तो शाहजे भाई, रिजेक्ट कर दे, नहीं कर सकते, सुन तो लो शाहजे कर भाई, सकता सुनो है, तो शाहजे वो भाई, उसका बेटा रहेगा, सुनो उसकी शाहजे आइडियोलॉजी भाई सुनो उसकी तो, आइडियोलॉजी। साजे सुनो तो साजे, सुन तो लो मेरे लिए। मैं आज की डेट में अगर कोई कितना भी रिजेक्ट कर ले, लेकिन अगर आप हिंदू इकोसिस्टम के अंदर है, इंडिक इकोसिस्टम में, व्हेन आई से हिंदू, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू व्हिच इंक्लूड्स हिंदू, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। मैं आज की डेट में किसी के पास कोई भी हो, मुझे घर से निकाल दिया गया हो, मेरे बाप ने मुझे डिसऑन कर दिया हो, लेकिन अगर मुझे अपनी पैतृक संपत्ति चाहिए तो मेरे बाप भी मुझको नहीं रोक सकते। यार पर सीक्स ये do हक not शाहजे जी एक do सेकंड not रुक जाओ। consider themselves to be पूरा Hindus, लाइन that's कंप्लीट हो it. जाने दो, पूरा लाइन कंप्लीट हो जाने दो शाहजे। किसी ने कब्जा कर रखा है ना, तो वो भी नहीं रोक सकता। दिस इज इंडिक यार इकोसिस्टम, इसका यार देखें, इस्लामिक आप इंटरप्रिटेशन लेने की जरूरत नहीं है। विवेक भाई, ये आपका ना अपना ओपिनियन हो सकता ये है, लॉ लेकिन है, एट द एंड ऑफ ये द डे, लॉ as है, far as Sikhs are ये concerned, लॉ their है सर। respective ideology on their own, they are autonomous, they have absolutely